Hello, everyone. Welcome back to the Organon classroom with Dr. Gazala. Here we are with episode 8, a final episode for the lecture series of chronic miasms by Dr. J. H. Allen. Today we see complications of psychosis, suppression induced by operative methods, and lesions of psychosis as given in volume 2 of Psychosis in the Chronic Miasms by Allen. Let's begin with the lecture for today. जे चैलेंज वॉल्यूम 2 कॉम्प्लिकेशंस ऑफ साइकोसिस। ठीक है, तो ये होने वाला है हमारे लिए एक क्लिनिकल रिवीजन। तो इसमें हम क्या क्या स्टडी करेंगे? वी आर गोइंग टू स्टडी द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी मैनिफेस्टेशंस। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया उसके स्टेजेस के बारे में। अब उस स्टेजेस में आपको क्या चेंजेस दिखाई देंगे क्लिनिकली, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू cover. Then we are going to see the mechanics of suppression और इसमें operative procedures का क्या हाथ होता है, how well they are contributing to the concept of suppression, ये हम करेंगे. And last but not the least, we are going to see last moment clinical memorization या last moment revision आप कैसे करने वाले हो for this entire topic, right? अब वी आर गोइंग टू सी द हैनिमन्स लॉ ऑफ क्योर एंड द डेंजर ऑफ सप्रेशन. ठीक है, इसका एक फेस ऑफ करेंगे. एंड एज वी ऑल नो, हैनिमन्स लॉ ऑफ क्योर बोलता है समथिंग व्हिच इज वेरी आइडियल, समथिंग व्हिच इज वेरी स्टैंडर्ड एंड समथिंग व्हिच इज वेरी यूनिवर्सल. What? That if there are skin eruptions coming up, if there are growths on the skin, or if there's any skin complaint which the patient is showing to us, it's actually an ideal condition for us. Why? Because it is protecting our internal organs from being affected, right? These are the tertiary skin lesions which are life saving. वाई लाइफ सेविंग? बिकॉज यहाँ तक भी जब हो रही है चीजें, सो द वाइटल फोर्स की जो सेल्फ प्रिजर्वेशन की वर्च्यू है, बाय द वर्च्यू ऑफ इट, बाय द क्वालिटी ऑफ इट, ठीक है, वाइटल फोर्स इज स्टिल एबल टू मैनेज अप इटसेल्फ. ठीक है, अपने को उसको सिर्फ अभी असिस्ट करना है टू गेट रिड ऑफ द डिजीज, एंड इट इज हेल्पिंग अस शो कि बाबा ये उसके सिम्टम्स है. So accordingly, we are going to match up our simillimum. We will take the case, make a portrait of disease, match up a simillimum, and then give an appropriate medicine. तो इससे क्या होगा? The internalization of the disease is prevented. Okay, we are treating the vital force over here again, guys. We are not treating the skin complaint. Skin complaint is going to be part of our totality. The skin complaint is not going to be our only totality. ठीक है, ध्यान में रखो ये बात. एंड नेक्स्ट इज द डेंजर ऑफ सप्रेशन. नाउ सप्रेशन इज ऑलवेज डेंजरस फॉर अस. व्हाई? बिकॉज वंस व्हेन वी रिमूव these outer growths, these abnormal growths, कुछ भी जो भी स्किन पर आ रहा होगा, we are only treating that with n number of liniments, steroidal applications, local applications, ointments, lotions, या कॉटराइज कर देते हैं कभी कभी कोई ग्रोथ को, कुछ डिसेक्ट वगैरह करके निकाल देते हैं समथिंग. सो व्हाट इज हैपनिंग? वी आर ड्राइविंग द डिजीज टू द रिमोट इंटरनल वाइटल ऑर्गन्स. अब अंदर तो वी आर नॉट ओपनिंग द पेशेंट एंड सीइंग. ठीक है, सिर्फ एक्सप्लोर तो नहीं करना है कि वी आर जस्ट ओपनिंग अप द पेशेंट एंड सीइंग की डिजीज क्या है. अब डिजीज इज इन द डायनामिक लेवल, वो आपको दिखेगी भी नहीं अनलेस देयर इज सम चेंज इन दैट सिस्टम, राइट? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इट विल स्पीडीली ब्रिंग द डेथ प्रोसेस. डेथ प्रोसेस क्यों? बिकॉज इट गेट्स वर्स. ठीक है, अगर पेशेंट का तब मान लो ससेप्टेबिलिटी भी हाई हो, everything is suiting up but in the wrong direction, so then it obviously gets closer to that death, matlab destruction over here. Okay, then syphilis takes years to accomplish, but what psychosis does is rapid. ठीक है, साइकोसिस का रैपिड प्रोग्रेशन होगा. सिफिलिस विल टेक इयर्स टू डेवलप in that manner. Patient statement is that I have never been well since the day I was cured. I have never been well since the day I was cured. I was cured of what? The skin complaints. स्किन कंप्लेंट पेशेंट की हट गई, स्किन के लिए कुछ दे दिया, वो सारे ग्रोथ्स निकल गए, सारी स्किन कंप्लेंट्स चली गई, बट द पेशेंट इज अनवेल. व्हाई? बिकॉज द डिजीज हैज गॉन inwards. So that is the danger of suppression. अब lesions and stages, जो हमने सारे स्टेज किए थे in the last lecture, primary, secondary and the tertiary stage of psychosis. So here we come it as the primary stage. So the timeline being immediate post infection. Nature, complications are few and seldom dangerous unless locally treated. Key insight: all secondary and tertiary symptoms are the result of poor treatment, that is suppression. ठीक है, साइकोसिस अपने को प्राइमरी स्टेज पे भी टाइम देता है कि तुम उसको रिवर्स कर पाओ.
ठीक है. But then this stage is often overlooked because its psychosis is going to progress very rapidly. It's not going to sit up for you to wait and see and check. Okay, that is why, guys, I repeat again, tactful case taking is very important, and your observation becomes more important. Then we proceed to the secondary stage. ठीक है, अब suppress हो गया. Secondary stage varies from 90 days to 1 to 2 years post infection. Nature is almost every disease is of an inflammatory nature, right? Tertiary stage, the last stage of it, months in women, tubercular constitution to years if vitality is good. ठीक है, but आज के time if you go on to see, we can question the vitality of people, right? Abhi every second person is having some or the other lifestyle disorder. ठीक है, वहां पे ही अपनी सबसे पहला तो इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है. What are we going to see for the later serious diseases? Today cancer is something which is very common. Gone are the days when cancer used to be a badi bimari. Today cancer is something which is manageable, yet very common in people, right? प्लस जो मेंटल फटीग, मेंटल स्ट्रेस और जो मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज होते हैं विच ऑफन गेट ओवरलुक्ड एंड आर नॉर्मलाइज्ड इन योर डे टू डे लाइव्स एंड एवरीथिंग, इवन दैट अफेक्ट्स आवर इम्यूनिटी टू अ लार्ज एक्सटेंट, राइट? तो वहां से जो साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स, बहुत बार हम उसको क्लासिफाई भी नहीं कर पाते कि इफ इट इज साइकोसोमैटिक और नॉट. We take it as only a somatic disorder which comes into picture, but it is usually a result of the psycho ट्रिगर ऑफ इट. ठीक है, तो पीएनए एक्सेस आई होप आप लोगों को पता हो, नहीं भी हो तो वी आर गोइंग टू कवर इट लेटर इन वन ऑफ अ वेरी गुड लेक्चर्स. तो वो ध्यान में रखते हुए ये ध्यान में रखेंगे दैट if the vitality is good, it's going to take months to years to develop, but if the vitality is not, obviously baat hai, the patient is going to deteriorate very early. Nature is manifests as protective skin lesions or deadly internal malignancies. Okay, the primary stage and complications. Primary stage में अभी see now these words, these clinical terms and all of these point wise which is given to you on your screen that you can see, ये book से ही लिया गया है. ठीक है, ये अपने मन का नहीं लिखा है, book में जैसा था वैसा है, and you have to write it in the same manner. Okay, you're not going to change anything out of it. Primary stage, first grade change, it attacks the blood producing anemic states, followed by catarrh, rheumatism, gout, and diabetes. Slow and difficult to eradicate if a tubercular diathesis is present. ठीक है, ठीक है. व्हाट इज दिस डायथेसिस? अगेन जो हमने कहा था, माइजमेटिक सॉइल जो बंदे का होगा वो पेशेंट का होगा, उसके बेसिस पे जो निकल के आता है, ओके, इज व्हाट इज द डायथेसिस. तो अगर पेशेंट का ट्यूबरकुलर डायथेसिस है, इट्स गोइंग टू बिकम all the more difficult to treat because again tubercular, pseudosore according to Allen, mix of sore and syphilis together. ठीक है, दोनों भी सुपर डिस्ट्रक्टिव माइजम्स, उसके अंदर साइकोसिस अगर मिक्स हो जाए, इवन इफ दैट्स द प्राइमरी स्टेज ऑफ इट, सो यू कैन imagine what calamity it is going to be for that patient. All right, primary complications क्या दिखेगा आपको? cystitis, severe forms develop only where local treatment is employed. Abscesses from about the neck of the bladder or in the urethra followed by hemorrhages. Okay, gonorrheal orchitis seen in cases tampered with local medication. Buboes, suppurative or non-suppurative. ठीक है, what are buboes? Bubo is lymphatic इन्फ्लेमेशन जो हो जाता है, इट्स अ वेरी पेनफुल कंडीशन, एडेनाइटिस वगैरह सब होता है ना, ऑल ऑफ दिस फॉर्म. सो वो सपोरेटिव भी हो सकता है, नॉन सप्यूरेटिव भी हो सकता है. ऑल राइट, देन कम्स द सेकेंडरी स्टेज सिम्टम्स. सेकेंडरी स्टेज सिम्टम्स में क्या है? द म्यूकस मेम्ब्रेन्स, मोल्टेड और स्पॉटेड अपीयरेंस, लॉस ऑफ नॉर्मल पिंकिश hue, dark venous congested spots, dark reddish color mixed with natural color, often covered with the thin purulent secretion sensitive to touch. देखा हमने पहले वाले जो लेक्चर था अपना साइकोसिस पार्ट 1 में, उसमें वी हैड टोल्ड हाउ दिस ओडर thing is going to be a guiding symptom for us, right? And the pain is going to still come later, but that odor, ठीक है, जो fish brine odor, that pungent odor and the foul smelling odor is going to come from the discharges from the patient, okay, from the complaints of the patient. That is also going to be our guiding symptom. तो ये clinically बहुत important हो जाता है to distinguish, okay, between patients and between miasms together.
तो म्यूकस मेम्ब्रेन मॉटल्ड एंड स्पॉटेड अपीयरेंस होने वाला है, प्यूरुलेंट सेक्रेशन. द साइकोटिक डिस्चार्ज इज गोइंग टू बी ओडर इज फ्रीक्वेंटली डायग्नोस्टिक अलोन, अभी बात की हमने. प्लस द पंजेंट मस्टी डेड फिश और फिश ब्राइन लाइक ओडर, highly excoriating, causes erythema and chapping of the skin, excoriates unaffected parts as it passes over them, especially in fleshy patients or babies. ठीक है, डिस्चार्जेस तो हो रहे हैं, डिस्चार्जेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, वो स्मेल भी कर रहे हैं, बट दे आर एक्सकोरिएटिंग. ठीक है, वो पार्ट छिल जाएगा पेशेंट का. द पेशेंट हेंस इज गोइंग टू कंप्लेन ऑफ पेन व्हेन एवर देर आर डिस्चार्जेस. ऑल राइट, स्पेशली इन फ्लैशी पेशेंट्स, फ्लैशी मतलब ओबीज. ठीक है, थोड़े जो प्लम्पी टाइप्स होंगे वो, एंड बेबीज टुगेदर. नेक्स्ट कम्स पेल्विक डिजीज एंड इन्फ्लेमेशंस. ओके, अब इसका सिवियरिटी कैसी रहने वाली है. पेल्विक डिजीज, फीमेल पेल्विक डिजीजेस, जो हम लोग का पेल्विक इन्फ्लेमेटरी पीआईडी यूजुअल, बहुत, इट्स वेरी कॉमन गाइस, इट्स वेरी कॉमन, एंड दिस इज आल्सो ऑफन ओवरलुक्ड. ओके, बिकॉज वी आर वेरी क्विक टू जज. ठीक है, बिकॉज पेशेंट कमिंग with leukorrhea, we are very एकदम quick in any candidiasis ही होगा. How often do we perform a PV on a patient? Do we send the patient कि नहीं आप गायनेक के पास जाओ और वो करवा लो? You really think patient is again going to waste their 600 500 rupees and say कि नहीं मैं अभी ये क्यों waste करूँ, एक डॉक्टर को तो बता ही दिया. So hence it is also important that when we are studying gynecology as a topic, as a complete topic in our BHMS curriculum, we do it well. ठीक है, वो सिर्फ थेराप्स रिलेटेड ही नहीं पढ़ना है. जब गायनेक की बात आती है, गायनेक एंड ऑब्स टुगेदर, you have to have a good training in that. So when a patient is coming up to you, you can perform a simple PV or a speculum examination for that patient. You're not doing any procedure. Okay, mind you guys, you're not doing any procedure over there, or no surgical procedure at all. You're just examining the patient. So you have to be well versed. अपने आप को अच्छे से train करना सीखो. ठीक है, so the next time when you have a patient complaining of leukorrhea, of complaining of abnormal discharges, complaining of a lot of pain or something, you have to know where you have to palpate the patient first. ठीक है, and then PVN also still comes later, पहले palpation सीख जाएंगे. So clinical examination guys बहुत बहुत important है अपने लिए. तो back to psychosis, what happens is hydrosalpingitis, pyosalpingitis, and abscesses of the tubes. ठीक है, cystic degeneration of ovaries, cervix, and uterus, peritonitis, cellulitis, endometritis may assume a malignant character later. Okay, like peritoneal adhesions. Okay, तो मेल इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, मेल इन्फ्लेमेशन इज स्टिल लेस सिवियर, इट डज नॉट प्रोड्यूस एज disastrous effects or prolonged suffering, but prostatitis, I'm sorry, prostatitis, and epididymitis, gonorrheal orchitis, cystic troubles and all. Okay, बिकॉज अभी पिछली स्लाइड में भी हमने पढ़ा फॉर द डिस्चार्जेस पार्ट ऑफ इट, तो ग्लीट क्या होता है, एक कंटिन्यूअस और एबनॉर्मल डिस्चार्ज विच इज प्रेजेंट ओनली इन द पर्सन, इन द पेशेंट. ठीक है, द पेशेंट विल ऑलवेज कंप्लेन ऑफ सम और द अदर डिस्चार्ज फ्रॉम सम और द अदर ओरिफाइस ऑफ हिज बॉडी. ठीक है, तो दैट इज नथिंग बट अ पेंटेड अप गोनोरिया. वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड उसका नेचर रहा होगा, even if that is carried forward because of the law of inheritance that Alan has spoken about earlier. Okay, फिर सप्रेशन कैसे प्रोग्रेस करेगा गाइस, एवरीथिंग सी हैज एन ओडीपी. हम लोग ने ऑनसेट कर लिया, हमने ड्यूरेशन कर लिया, अब हम प्रोग्रेस पे आ गए. सो द प्रोग्रेस इज सप्रेशन, और प्रोग्रेस ऑफ सप्रेशन इज गोइंग टू बी ड्राइंग अप ऑफ डिस्चार्जेस बाय लोकल इरिटेशन और स्ट्रॉन्ग डक्ट्स. ठीक है, हो गया अपना लोकल एप्लीकेशन. Second is immediate functional disturbances. It occurs soon after suppression, headaches, neuralgias, and wandering rheumatic pains. Okay, so headache, neuralgia and wandering rheumatic pains. याद है पेशेंट का स्टेटमेंट क्या था पिछली फ्यू स्लाइड्स में, as given in Allen कि he has never been well since the time, since the day he was cured. ठीक है, तो जिस दिन उसका ये सब निकला स्किन के कंप्लेन्स, तब से उसको हेडेक, न्यूरैल्जिया, वॉन्डरिंग रूमेटिक पेन्स स्टार्ट हो गए. देन बिकम्स द पैथोलॉजिकल शिफ्ट. सी गाइस, माइंड यू अगेन इमीडिएट ये फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस में भी अगर हम ये माइजम को पकड़ पाए ना, इट बिकम्स अ लिटिल लेस डिफिकल्ट फॉर अस टू ट्रीट द पेशेंट. ठीक है, पर जब वो जाके पैथोलॉजिकल शिफ्ट मतलब ये पैथोलॉजी में आ गया, एंड इट स्टार्ट्स लीविंग, यू नो
the disease in the mucous membranes, the gluty inflammation, gluty again, the continuous discharges. Okay, obviously not of a pleasant kind. So the gluty inflammations become fibrous and the discharges ceases entirely. Forces turn into another direction. उसमें भी वो इन्फ्लेमेशन फाइब्रस अगर बन गया, वहां पे डिस्चार्ज भी बंद हो जाएगा, विच वाज वन ऑफ द सिंगल इंडिकेटर फॉर अस कि देर इज समथिंग ऑफ अ साइकोटिक बैकग्राउंड गोइंग इन. ओके, तो वहां पे द फोर्सेस, द वाइटल फोर्स विल टर्न इनटू अनदर डायरेक्शन, द वेरिकोस, गाउटी एंड फाइब्रॉइड चेंजेस. ओके. ओके. So the diagnostic matrix or the diagnosis standard continues here. So psychotic warts, which we called as verruca, will come into picture. अब इसके तीन presentations है, verruca vulgaris, verruca filiformis and verruca plana और the juvenilis. ठीक है, तो इसमें patient profile सबसे पहले vulgaris की क्या रहेगी? अपन तीनों हम लोग पढ़ने वाले पेशेंट प्रोफाइल ओरिजिन और टाइमलाइन, अपीयरेंस या लोकेशन के बेसिस पे. ओके, तो पेशेंट प्रोफाइल फर्स्ट वेरुका वल्गैरिस की, चिल्ड्रन, उसमें ओरिजिन इनका क्या है, हेरिडिटरी साइकोसिस, और टाइमलाइन और लोकेशन इट अपीयर्स अराउंड द सेकंड डेंटिशन. सेकंड डेंटिशन का मतलब क्या होता है, जब प्राइमरी टीथ गिर जाते हैं, दैट्स अ प्राइमरी वन. ओके, द फर्स्ट डेंटिशन व्हिच हैपेंस, सेकंड डेंटिशन इज व्हेन द परमानेंट टीथ स्टार्ट कमिंग इन. ठीक है, तो 6-7 साल यू कैन कंसिडर, तब जाके जो प्रेजेंटेशन आएगी इसकी इज गोइंग टू बी इन दिस पार्ट, दैट इज अ वेरुका वल्गैरिस. वेरुका फिलिफॉर्मिस एडल्ट होगा, पेशेंट प्रोफाइल एडल्टहुड. Origin is acquired psychosis. It would be either after suppressions or by operative procedures. ठीक है, अभी adult जब तक बन गए तब तक तो there would have been n number of suppression procedures or suppression steps that would have taken place, right? उसके बाद जो निकल के आता है is what acquired psychosis means, along with the operative procedures. How's the appearance? Appearance small, diameter, brownish or gray brown, pointed ends with spindle-like attachments. Okay. What is verruca plana or the juvenilis? Patient profile is children and young people. Again, hereditary form, appearance is pigmented, disseminate, irregular unilateral groups on backs of hands and faces. Okay. The specific skin manifestations, the red mole, pinhead to pea size. ठीक है, ये usually you see this a lot on surfaces, on people, on patients. ये observe करने वाली चीज होती है. The red mole, it's pinhead to pea size. Okay, smooth, round, shiny, red as blood, looks like a polka dot upon the skin. This is very common, guys. Even it must be present somewhere on your body as well. ठीक है, have a look, and that is what significantly it means, it's a positive sign of acquired or hereditary psychosis. Okay, next is the spider spot, found on upper surface half inch below the lower eyelid or the malar bone. The dilated capillaries resembling meshes of a spider web. It appearance around secondary dentation, remains stationary at puberty. The third is a psychotic acne, onset around the menstrual period, large reddish, blunt, angry looking, sore to touch, non-suppurating and isolated, not in groups like psoriatic acne. ठीक है, तो ये तीन manifestations भी of the red mole, spider spot and psychotic acne becomes our guiding symptoms towards psychotic miasm as our diagnosis. So the malignant internalization followed by the cardiac affections. Okay, now the malignant internalization is going to develop from a psychotic taint with skin manifestations fail. Okay, it includes the clinical diagnosis of carcinoma, lupus, epithelioma, diabetes mellitus, Bright's disease. Okay, now we have to note over here that lupus and ringworm जो होते हैं, they feature a combined psychotic element upon a tubercular base. ठीक है, तो उसका tubercular diathesis होगा, but a psychotic element into it is what lupus and ringworm is going to be. Okay, next is the cardiac affection and sudden death. Symptoms are going to be hypertrophy, slow intermittent pulse, dull ache with no sharp pain. The at-risk profile is going to be sudden deaths that occur in great men, senators, businessmen leading a sedentary life.
Okay, dietary triggers are going to be habitual use of aromatic spices, rich food, and especially imported wines. Wines in any form are more harmful than any other stimulants. Okay. Next, Allen says about the psychotic cough and the psychotic rheumatism. The psychotic cough is something which originates as a rumbling cough. It starts in early fall, winter with dry, teasing cough and watery nasal flow, passes into the bronchi in 7 to 10 days with scanty expectoration, cannot breathe through the nose because of the nose blocks. The psychotic rheumatism presents as the muscular and rheumatic pains. Aggravations kaise hoga with least exposure to wet or dampness, chilly winds, or any rise in barometer reading. The fluctuating temperatures. Patient becomes super sensitive to pain due to constant palliation. The law of cure in this case is a golden rule that the cure cannot be made unless the discharge is re-established. Our only hope lies in reproducing the original disease in order to cure any secondary disease. Right? Herring's law of cure अपने को क्या बोलता है? One of the indicators for cure taking place is the return of the first original symptom which the patient had developed. राइट, तो सबसे पहला जब होगा जब हम डिस्चार्जेस को रिस्टोर कर पाएंगे तब वी नो दैट वी स्टिल हैव होप इन रिप्रोड्यूसिंग द ओरिजिनल डिजीज. ओके, ताकि जो सेकेंडरी डिजीज डेवलप हुई है, जो सारे सीरियस मैनिफेस्टेशंस है, दोज आर आल्सो क्योर्ड अप. So the primary and secondary suppression is easily cured if taken early. Okay, the gonorrheal discharge can be reproduced with drugs like Medorinum, Nux vomica. They work very well when indicated. Okay, the tertiary phase is slow and difficult to cure, but Allen says that the latent psychosis is extremely hard to eradicate because the original discharges cannot be produced over here because destruction has already taken place. Okay, now this is something to remember at a glance, which talks about the stage and timeline, the key clinical signs, the suppressive triggers, and the ultimate complications that you might see. Okay, you might want to screenshot this table, guys. Okay, everything that we have discussed in a past slides. Now, this is the handout which is available on our Instagram handle at the Organon Classroom. Please follow up that for announcement and such handouts for your last moment revisions as well. Also, if you find this channel relatable, please like, share, and subscribe. And stay tuned because I will be uploading the short topics in the book of Allen in PowerPoint forms in 2 3 parts for completing up this series as a whole. And coming up next would be lecture series on the principles and practice of homeopathy by Richard Hughes. Okay, thank you so much. Have fun, study well. See you soon. Thank you.